السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس القرآن for رمضان المبارک ڈے 16۔ رمضان المبارک کے 16ویں دن کے لیے درس القرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ آج کا درس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 98 سے شروع ہو رہا ہے۔ The dars today the dars is going to start from the verse 98 of chapter 2 Al-Baqarah. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ Say, whoever is an enemy of Jibreel, for it is who has caused it to descend on thy heart by the command of Allah, fulfilling that revelation which precedes it, and is a guidance
and glad tidings to the believers. There is a note. Jibril is a compound word made up of Jabr and Il and means a brave man of God or a servant of God. Jabr in Hebrew is Gaber, which means a servant, and Il means mighty, the powerful. According to the Ibn Abbas, the other name of Jibril is Abdullah. This is mentioned in Jarir. Jibrail, Jibrail being the chief among the angels or mentor was the bearer, Mansur. It is mentioned in Mansur. Jibril, being the chief among the angels, was the bearer of the Quranic revelation. According to commentators of the Holy Quran, Jibril is synonymous with Ruhul Qudus and Ruhul Amin. According to the Bible, also the function of Jibril is to convey message of God to his servants. The Quran, as the present verse points out, assigns the same function to Jibril. But in some later Jewish writings, he is described as the angel of fire and thunder. In the Holy Quran, Holy Prophet's time, the Jews looked upon Jibril as their enemy and as an angel of wars, calamities, and hardships. Verse 99. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi. Whoever is an enemy to Allah and his angels and his messengers and Jibrail and Mikael, then surely Allah is an enemy to such disbelievers. Mikael is also one of the chief angels. The word is considered as being a combination of meek and ill, which means who is like God. That means there is none like God. The Jews looked upon Michael as their favorite angel and as the angel of peace and plenty, rain, and harvest. This is mentioned in Ibn Kasir, and is considered to be associated chiefly with the work of sustaining the world. Another explanation is that angels constitute an important link in the spiritual chain, and he who breaks even one link of the spiritual chain or manifests against any single unit of the spiritual system, in fact, severs his connection with the whole system. Such a one deprives himself of the favor and blessings which are bestowed upon the true servants of God and renders himself
deserving of the punishment decreed for transgressors. Verse 100. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. And surely we have sent down to thee manifest signs, and none disbelievers in them but the disobedient. Verse 101. What every time they make a covenant, will a party among them throw it aside? Nay, most of them have no faith. Verse 102. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ. And now that there has come to them a messenger from Allah, fulfilling that which is with them, a party of the people to whom the book was given have thrown the book of Allah behind their backs, as if they know it not. Verse 103. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. And they pursue the course which was pursued by the rebellious men against the kingdom of Solomon. And Solomon did not disbelieve, but it was rebellious ones who disbelieved. They taught people falsehood and deception, and they claim that they follow what was revealed to the two angels in Babylon, Harut and Marut. But these two taught certainly known that he who traffics therein has no share of God in the hereafter. And surely evil is that for which they have sold their souls, if only they knew. Here is an explanation that tatlu talautuhu means I followed him. Lane. Allah mulke Sulaiman. Allah gives the sense of fi, that means in, or during, and against. The particle is also used in the Quran in the sense of in conformity with, assigning a cause, in the sense of fi and min. Tala alayhi also means he laid against him. There is another note. Seher. Seher means a crafty device, mischief, enchantment, producing what is false in the form of truth. Any event of which the cause is hidden and which is imagined to be different from what it really is. Thus, every falsehood, deceit, or crafty device which is meant to hide the real object from public view
is included in Sihr. The word two angels here signifies two holy men because the two angels are here mentioned as teaching something to the people, and angels do not live among men and do not have free intercourse with them. Harut and Marut. Harut and Marut are both descriptive names, the former being derived from Harata, that means he tore up, means one who tears up, and the latter derived from Maratha, that means he broke, means Maratha means one who breaks. These names signify that the object of the appearance of these holy men was to tear asunder and break the glory and power of the empire of the enemy of the Israelites. These holy men told the new members at at the time of initiation that they were a sort of trial from God, serving to differentiate between the good and the bad. They confined the membership of their society to the males only. The verse signifies that the Jews in the time of the Holy Prophet indulged in the same mischievous devices and practices which characterized their forefathers in the days of Solomon. It further says that the mischief mongers in Solomon's time were those rebellious men who called him to disbeliever, who called him a disbeliever. The verse clears Solomon of the accusation of disbelief. It adds that the mischief mongers in Solomon's time taught their associates such signs as conveyed to them meanings quite different from those generally understood. For the purpose of deceiving people and concealing their real designs. The verse alludes to those secret plots which the enemies of Solomon hatched against him and by which they sought to break up his empire. It is implied that the Medinite Jews are now resorting to the self-same vile tactics, vile tactics against the Holy Prophet, but they will never succeed in their evil designs. Here is another note. When the Jews saw that the power of Islam was steadily expanding and opposition to it in Arabia had completely broken down, and they could not arrest or retard its progress, they began to excite outsiders against it. Oppressed and persecuted by Christian rulers, they had taken refuge in Persia and had shifted their religious center from Judah to Babylonia. Gradually, they came to exercise great influence at the court of the Persian monarchs and began to hatch plots against Islam. When Chosroes II received a letter from the Holy Prophet
inviting him to accept Islam. They succeeded in instigating him to issue orders to Badan, the governor of Yemen, which was then a province of Persia, to arrest and send the Holy Prophet in chains to the Persian court. It is to these plots and machinations of the Jews in the Prophet's time that the verse alludes. Their attention is invited to the fact that their forefathers had also hatched plots first against Solomon when some members of their community set up against him societies in which secret signs and symbols were taught. The second occasion when they resorted to secret societies was during their captive in Babylon in the time of King Nebuchadnezzar. The holy men referred to in the verse were Haggai, the prophet, and Zechariah, the son of Iddo. These holy men confined membership of their society to males and told the new members at the time of initiation that they were a sort of trial from God and that the Israelites should not therefore refuse to believe what they said. When Cyrus, king of Media and Persia, rose to power, the Israelites entered into a secret agreement with him, which greatly facilitated his conquest of Babylon. In return for this service, Cyrus not only allowed them to return to Jerusalem, but also helped them in rebuilding the Temple of Solomon. The verse hints that the efforts of the Jews in two previous occasions had met with different results. On the first occasion, their conspiracy being directed against Solomon had ended in the total loss of their prestige, and finally in their banishment to Babylon. On the second occasion, they took a similar course under two inspired personages and were successful. Hence, in order to indicate whether the efforts of Jews against the Holy Prophet would meet with failure, as they did in the days of Solomon, or with success, as in Babylon, the Quran says, the opponents of the Holy Prophet are learning that which would harm them and do them no good, hinting that they will not be successful as their forefathers were in Babylon. Verse 104. Walau annahum amanu wattaqaw, and if they had believed and acted righteously, better surely would have been their reward from Allah if only they knew. And that is the end of thus today. Now in Urdu. आज का दर्स
सूरत उल बकरा की आयत नंबर 98 से शुरू होता है। कुल मन कान अदुव्वल जिब्रील, तू उनसे कह दे कि जो शख्स इस वजह से जिब्रील का दुश्मन हो कि उसने तेरे दिल पर अल्लाह के हुक्म से इस किताब को उतारा है, जो इस कलाम को जो इससे पहले मौजूद है सच्चा करने वाली है और मोमिनों के लिए हिदायत और बिशारत है। तो उसे याद रहे कि जो शख्स भी अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसके रसूलों और जिब्राईल और मीकाईल का दुश्मन हो, तो ऐसे काफिरों का अल्लाह भी यकीनन दुश्मन है। जिब्राईल जबर और ईल से ये मुरक्कब है। जबर के माने होते हैं पहलवान और ईल अल्लाह का नाम है, अल्लाह का पहलवान। और जिब्रील का एक नाम रूहुल अमीन और एक नाम रूहुल कुदस भी बयान हुआ है। तो ये अल्लाह ताला का कलाम लाने वाला है, कलाम लाने वाला फरिश्ता है। तो वो वही कुरान करीम को नाजिल करने वाला फरिश्ता था। जबकि बाज़ यहूद इसको मसाइब का या मौत का या जंगों का फरिश्ता भी करार देते थे, इस वजह से वो इसके दुश्मन थे। तो यहाँ इस अमर की वजाहत की गई है कि ये कलाम लाने वाला फरिश्ता है और जो इसका दुश्मन है वो यकीनन अल्लाह का भी दुश्मन है। वलकद अनजलना इलैका आयातिम बय्यिनात, और हमने तुझ पर यकीनन खुले खुले निशान नाजिल किए हैं और नाफरमानों के सिवा उनका कोई इनकार नहीं करता। अवकुल्लमा आहदू अहदन नबज़हु फरीकुम मिनहुम, और क्या ये बुरी बात नहीं कि जब भी उन लोगों ने कोई ऐहद किया तो उनमें से एक फरीक ने उसे फेंक दिया। यही नहीं बल्कि उनमें से अक्सर तो ईमान के करीब भी नहीं फटकते। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाह, और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से एक ऐसा रसूल आया जो उस किताब को जो उनके पास है सच्चा करने वाला है, तो उन लोगों में से जिन्हें वो किताब दी गई थी, एक फरीक ने अल्लाह की ताज़ा किताब को अपनी पीठों के पीछे फेंक दिया, गोया कि वो उसे जानते ही नहीं। वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलेमान, नीज वो यहूदी उस तरीके अमल के पीछे पड़ गए जिसके पीछे सुलेमान की हुकूमत के ज़माने में उसकी हुकूमत के बागी पड़े रहते थे। और सुलेमान काफिर न था बल्कि उसके बागी काफिर थे। वो लोगों को धोखा देने वाली बातें सिखाते थे और बजा में खुद इस बात की भी नकल करते हैं जो बाबल में दो फरिश्तों हारूत और मारूत पर उतारी गई थी। हालांकि वो दोनों तो जब तक ये न कह देते थे कि हम खुदा ताला की तरफ से आजमाइश के तौर पर मुकर्रर हुए हैं, इसलिए ए मुखातिब हमारे अहकाम का इनकार न करना, किसी को कुछ नहीं सिखाते थे। जिस पर वो लोग उन दोनों से वो बात सीखते थे जिसके जरिए से वो मर्द और उसकी बीवी के दरमियान तफरीक कर देते थे, और वो अल्लाह के हुक्म के सिवा किसी को भी इस बात के जरिए से जरर नहीं पहुंचाते थे। और इसके बिलमुकाबल ये यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन तो वो बात सीख रहे हैं जो उन्हें जरर देगी और नफा नहीं देगी। और ये लोग यकीनन जान चुके हैं कि जो इस तरीक को इख्तियार कर ले आखिरत में उसका कोई भी हिस्सा नहीं, और वो चीज़ जिसके बदले में उन्होंने अपने आप को बेच रखा है बहुत ही बुरी है, काश कि ये जानते। और अगर ये लोग ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते तो उन्हें मालूम हो जाता कि अल्लाह की तरफ से मिलने वाला बदला ही बेहतरीन बदला है, काश कि ये जानते।
इस आयत की तशरीह की ज़रूरत है। मैं तफसीर सगीर में बयानशुदा तफसील बयान करता हूँ। इसमें एक तो शैतान का लफ्ज़ बयान हुआ है, मा तत्लु शयातीन। शैतान के माने होते हैं कुल्लु आतिन मुतमर्रिद, यानी हर सरकश और हद से बढ़ने वाला। ये अकरब में माने लिखे हैं। मुफरदात रागिब में भी वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन में शयातीन से सरकश इंसान मुराद लिए गए हैं, इसलिए यहाँ तर्जमे में बागी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। यहाँ दो फरिश्तों हारूत और मारूत का जिक्र है, तो ये दो फरिश्ते यानी दो फरिश्ता खसलत इंसान थे, क्योंकि जिक्र मिलता है कि वो लोगों को बातें सिखाते थे, उनसे मिलजुल कर रहते थे, उनसे बातें करते थे, उनके सामने मौजूद थे। तो जो फरिश्ते हैं वो तो सामने इस तरह से नज़र नहीं आते, ना लोगों से मिलजुल कर वो रह सकते हैं, रहते हैं। इसलिए ये इंसान ही थे जो कि अपनी खसलत की वजह से फरिश्ता सिफत इंसान थे। युफर्रिकून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही, वो फरिश्ते लोगों को क्या सिखाते थे? वो लोगों को खास दीनी तालीम देते थे, जिसकी वजह से औरत ईमान ले आती थी। जो औरत ईमान ले आती थी वो ईमान न लाने वाले मर्द की परवाह नहीं करती थी, और जो मर्द ईमान ले आता था वो न लाने वाली औरत की परवाह नहीं करता था। बल्कि अगर मियाँ बीवी में से बीवी ईमान ले आती तो वो उस तालीम को जो उसे सिखाई जाती थी मुकद्दम रखकर अपने खावंद से अपनी जमात की बातें छुपाने लग जाती, और अगर मर्द ईमान ले आता तो वो अपनी बीवी से बातें छुपाने लग जाता, और दोनों एक दूसरे को अपना राजदार नहीं बनाते थे, सिर्फ खुदा के रसूल या उसके नाइबों को राजदार बनाते थे। वलाउ अन्नहुम आमनु वत्तक़ौ, और अगर ये लोग ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते तो उन्हें मालूम हो जाता कि अल्लाह की तरफ से मिलने वाला बदला ही बेहतरीन बदला है, काश के ये जानते। आज का दर्स खत्म होता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।